Hello students, welcome back to Tantray physics classes. Yesterday I started a lecture series on rotational dynamics and I already discussed center of mass with you. And today we will go to the applications. How to look at the center of mass of different configurations, different groups of objectives. So let me start like this, and we already know the formulas. Point number one. Suppose we have this kind of a situation. So x is y. Here we have a rod of length, okay, suppose L1, and here we have one more rod of length, okay, L2. We want to find the center of mass of the system of these two rods, but they are homogeneous, means both the rods have the same density. Both rods have the same density. Have same density. I mean, they are of same material. These may be two iron rods, there may be two silver rods or aluminum. So we have to locate the center of mass of these system of two bodies. Bodies is rods. Okay. What is the center of mass of this body? It is at its own center. Center of mass this rod. And what is the center of mass of this rod? That is it's on its own at its own center. Because this is symmetrical body, this is also symmetrical body. And the center of mass of these two bodies will lie on this line. Because these are only two bodies. It will be somewhere here. Between the two on this line. Okay. So how to write the center of mass? How to look at the coordinates of the center of mass of these two body system? So let its mass be m1, let its mass be m2. What are the coordinates of the center of mass of this rod? That is L1 by 2, because it is centers from here, origin from here, L1 by 2. And what's the y coordinate? That is 0. इस point का क्या है coordinate? That is L2 by that is x is 0, y is, it is negative of, if it is taken upward as positive, y axis it is minus L2 by 2, something like this. So how to look at the center of mass? The center of mass is something like this. XCM, you already know the formula, m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. This is the formula, base formula. And if I substitute this m1 but in terms of length, I will substitute it. That's m1 is lambda, that's mass per unit length of the rod, into L1 x1 plus lambda L2 x2 by lambda L1, because lambda is defined as the mass per unit length. So what is the mass of the total length of the rod? That is lambda L1 plus lambda L2. Lambda gets cancelled everywhere. XCM is equal to L1 x1 plus L2 x2 plus maybe other rods by L1 plus L2. So what we have learned? We have learned something from here. If we have length considerations, then the formula converts into lengthwise. It is m1 x1 m2 x2. It will be L1 x1 plus L2 x2 plus so on by sum of the lengths. So the same formula gets converted, provided these are homogeneous. I mean, they have the same mass per unit length. The rods, different rods have the same material. So YCM similarly will be L1 y1 plus L2 y2 plus so on divided by L1 plus L2 plus so on. So we wrote down the formula in terms of lengths. If we do this, solve this problem now, so what should we write for XCM? L1, okay, let me write down the formula first. L1 x1 plus L2 x2 divided by L1 plus L2. That is the formula by this logic. So XCM किसके बराबर होगा? L1 तो वही L1 length. What is its coordinate? That is L1 by 2 plus what L2, that is this. What is its coordinate? X coordinate, that is 0.
divided by L1 plus L2. This will be equal to L1 square from here divided by 2 times L1 plus L2. That's all. So similarly, you can find YCM. Y coordinate of the center of mass here, center of mass, that is L1 Y1 plus L2 Y2 plus so on divided by L1 plus L2. You can substitute the values here. Y1 for this is 0 and Y2 for this is minus L2 by 2. So you can write it that way. तो कैसे लिखेंगे हम इसको? आप इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो YCM is equal to, okay, it is L1, what is this Y1? That is 0 here, plus L2, what is this Y? That is minus L2 by 2 divided by L1 plus L2. So it will be YCM equal to 0, it is minus L2 square by this 2 will get here, so L1 plus L2. This is the Y coordinate. So we have found the center of mass of the system of these two rods by simple technique. But now the M formula gets converted into L. So M1 x1 plus M2 x2 gets converted into L1 x1 plus L2 x2 divided by sum of the lengths, provided these two rods have the same density. I mean they are the same material. Number 1. Okay, let us go to the point number 2. Point number 2. For the practice purposes, let me again solve this one. It is X, it is Y. It is a rod of length L, suppose. It is one more rod of length, okay, let me take it 2L length. Let me take its length L, right? So what is the center of mass of this rod? That is here. That is center of mass is L from here to here. Coordinates of center of mass is L and 0, and coordinates of this is X is here 0, X coordinate of this point. If rod is thin and it is just coinciding the y-axis, or let me take the y-axis this passing through the center. Zero, and what is the y coordinate? That's L by 2. And the center of mass of these two rods together will lie on this line. We have to find it is XCM and YCM. Why not use the formula? So XCM is equal to L1 x1 plus L2 x2 by L1 plus L2. So it will be XCM equal to, what is L1? Okay, let's take this rod as L1. That is 2L into X coordinate is L plus L2, its X coordinate is 0 by L1, that's 2L total length plus this L. So what is that? This gets cancelled. This 2L square divided by 3L, one gets cancelled. 2L by 3 is the X coordinate. You can also find the Y coordinate accordingly. YCM equal to, what is that? Use the formula. So it will be L1 Y1 plus L2 Y2 by L1 plus L2. You can substitute the Y1 as 0 and Y2 as L by 2 and get the answer. So if I substitute, so L1 is what? L1 is 2L, and what is Y1 for this? Coordinate of this rod, Y coordinate, that is 0, plus what is L2? That is L, this one, total length. What is Y coordinate? That is L by 2 divided by L1 plus L2, that is 2L by plus L. So that will be L square by 2 into, this is 3L, this gets cancelled, L by 6, L by 6, that's the answer.
this L square, it gets cancelled with this L by 6 is the coordinate. So x coordinate is 2L by 3 and y coordinate is L by 6. That's all. We can use similar rules for areas, discs. There are too many areas, 2 plates, 3 plates or 4 plates. We have to find the center of mass of the combination of so many areas. I mean, there may be some discs, there may be some plates whose center of mass we may have to find. Suppose it is a coordinate system. Third point, it is a coordinate system. It's a disk here, it's a disk here, it's a disk here, but all the disks, you see, they must have the same density, homogeneous. Otherwise, the formula is not going to work. Homogeneity. All the disks must be of the same material. So its area is A1, let me suppose, and it has coordinates x and y. It is z. It has coordinates x, y, z, 1, 1 and 1. It is area A2 and its coordinates are x2, y2 and z2. And its area is A3 and its coordinates are x3, y3 and z3. These 3 disks, or there may be more number of disks, and we have to find the center of mass of the system of these disks. Suppose it is somewhere here. So we have to find the center of mass of all these disks, coordinates of that center of mass. What's the XCM? What's the x coordinate of the center of mass of the system of these disks? Answer is simply A1 x1 plus A2 x2 plus so on divided by sum of the areas. Sum of the areas. What is YCM? That is A1 y1 plus A2 y2 plus so on sum of the areas. It is the same logic here. First of all, it was m1 x1 plus m2 x2, but m1 mass of the disk will be mass per unit area into area. So the mass per unit area cancels from numerator to denominator, and there remains a1 x1 plus a2 x. Same rule follows. Whatever we did in rods, the same thing we do here. Here it was m1 x1. So what we substitute for m1? We will substitute for m1 sigma mass per unit area into area. It will be sigma a1. Here it will be sigma a2. Here it will be sigma a1 plus sigma a2. Sigma common from the numerator and common from the denominator, they will cancel off. We will get this rule. It is only possible when all the disks have the same sigma. I mean, all the disks have the same mass per unit area. That's why we can write sigma here, everywhere we can write sigma, and that then gets cancelled. If the rods are of different densities, you can't use this rule. Be careful about that. I will go and do an example on that. When the densities are different, so we can't use this formula. But we can use the formula that we have, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x2 divided by sum of the mass. That we can always use. There is no exception to that. But here is an exception. These formulas can be used only when all the disks or all the rods have this same density. I mean, they are of the same material. Okay. Now, let me do some example for this disks areas type. So what should I do? Fourth point. Fourth. It is x, it is y. There is a disk here of radius r. It is a disk here of radius, okay, r by 2. And distance between from here to here, okay, let me suppose it is 10 r. What is the area of this disk? A1, let me suppose. What is the area of this disk? That is A2, let me suppose. What is the coordinates of this disk? 0 and 0. What are the coordinates of this disk? Center of mass coordinate of this disk? That is, okay, that is, what's the coordinates of this little disk? That is 10 r. That is the x coordinate, and it is on the x-axis, therefore y coordinate is 0.
the y coordinate is 0. And our question is, what is the center of mass of the system of these two disks? The disks are homogeneous. Disks are homogeneous. That is, density is same, sigma is same. They are of the same material. So we can use the rule that we already learned. What is XCM? Center of mass. YCM will be anyway 0, because both the disks are lying on the x-axis. So we don't need to find y coordinate of the center of mass. Y coordinate of the center of mass will be anyway 0, because the center of mass will lie on this line, maybe here. So it will be having XCM only. YCM is 0. So what is the XCM? That is A1 x1 plus A2 x2 by A1 plus A2. That is the rule. So what is the XCM? What is A1? Area of this? That's pi r square, disk area. Pi r square. Into what is it is x coordinate, that is 0. What is the area of the second disk? That is pi r square by 4, because of radius r by 2. Into what is this x2? That is 10 r. Divided by A1 plus A2, that is pi r square plus pi r square by 4. Let me solve this. This is 0. XCM is equal to, yes, that is pi r square by 4 into 10 r, numerator, divided by, this will be 5 pi r square by 4, this one. This 4 goes, pi r square goes with pi r square. It is 5 2. It is XCM is equal to 2r. Somewhere here, closer to the bigger area disk, 2r. 2r is the x coordinate of this center of mass of this system of two disks. That is all. Fifth. Okay. Now let me go to the fifth example. Fifth example. It is x, it is y. Okay. Let me not make it x and y. Okay, let us make it x and y. It's a disk having mass m and radius of 2a. It is again one more disk. Radius is a only, but mass is 2m. So obviously these two disks, these are disks, disk and disk. Obviously these two disks are not homogeneous. I mean, they are different densities. Otherwise, why should this bigger radius have smaller mass and this smaller radius disk has larger mass? Therefore, they are different material. So you can't use the formula that we have learned so far for homogeneous disks, for homogeneous rods, which can be converted into areas and lengths. If you have volumes, I mean rigid bodies of three-dimensional bodies, we can use the formula V1 x1, volume of the first object into its x coordinate plus volume of the second object into its x coordinate plus volume of the third object. We can also write the equation in terms of volumes. If there are not rods or disks, let there be 3 spheres. In case of 4 5 spheres, we can use the formula in terms of volumes. V1 x1 plus V2 x2 plus V3 x3 plus V4 x4 divided by sum of the volumes. So the equation can be written in terms of masses, lengths and areas and volumes if they are homogeneous. All the bodies are made of the same material. But here the bodies are not of the same material. Densities are different.
So we can't use the formula that we have learned just now. We have to again use the formula. What was that? XCM. Only we have the x coordinate. We'll be having only x coordinate. So what is the coordinate here of this mass disk? This is 0 and 0. Origin of the coordinate system. What is here? Coordinate of this? We must know the distance between here and here because they are touching. Radius of this disk is 2a. इसका radius a है. तो ये जो distance है ये 3a का distance है. और इसका जो coordinate है, क्योंकि ये जो center है यहाँ से कितना दूर है? 3a की दूरी पर है. तो इसका coordinate है 3a, 0. y coordinate 0 है. तो XCM ही निकालना है. YCM तो anyway 0 है because the center of mass will not go up and down. It will be lying on this line because both the disk centers are on the x-axis. तो क्या करेंगे आप? Yes, वही फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा m1 x1 plus m2 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2. तो क्या करोगे आप? XCM. Yes, what is m1? वो तो m है. बताइए इसका x क्या है? कोऑर्डिनेट दैट इज 0. प्लस बताइए इसका m क्या है? दैट इज 2m. बताइए इसका x क्या है? यहां से यहां 3a. बताइए m1 प्लस m2. चलो m प्लस 2m. राइट. तो अब जाकर के हम XCM निकाल सकते हैं. ऊपर है ये 6ma, ये वाला, ये तो खत्म, डिवाइड बाय 3m खत्म, और ये 2a का आंसर निकला. मतलब सेंटर ऑफ मास 2a के दूर, यहां पर सेंटर ऑफ मास है इधर. दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जब आप जो डिस्क है, अगर मटेरियल सेम नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, तब जाकर आपको बेस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा. समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. They use a wrong formula at a place and then they get the wrong answer. Okay, now let me go to one more concept जिसमें स्टूडेंट्स जनरली गलत करते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है. वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कैसे हम उस चीज को करेंगे. ओके, चलो उसमें 2-3 एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं ताकि वो क्लियर हो जाए. सिक्स्थ, हमारे पास एक डिस्क है, ये वाला, इसका रेडियस r है, डिस्क है, इसका रेडियस r है, लेकिन इस डिस्क का क्या है, इसका एक पार्ट गायब है, मिसिंग है, ये वाला है. उसका भी रेडियस दिया हुआ है, जो ये गायब है, मतलब इट हैज बीन रिमूव्ड. अगर ये रिमूव किया है तो हमें इस डिस्क विदाउट दिस पार्ट, आई मीन दिस पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. कहां है? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड बिकॉज लेफ्ट साइड में मास ज्यादा है, इसलिए यहां कहीं सेंटर ऑफ मास हो सकता है. हमें उस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए. तो अगर ये y एक्सिस आप लेंगे और ये x एक्सिस लेंगे आप, तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पर ही लाई करेगा. लेकिन हमें ये जो पोर्शन है, ये वाला, इसी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकाल. तो इसका रेडियस जो है, दैट इज ऑब्वियसली ये रेडियस इतना है, r का आधा है, तो ये इसका रेडियस r/2 है, जो मिसिंग पार्ट है. मिसिंग पार्ट का रेडियस r/2 है. तो इस चीज का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? इस पार्ट का, जिस डिस्क में ये पार्ट मिसिंग है. कभी कभी छोटा सा पार्ट मिसिंग होता है, कभी बड़ा सा पार्ट भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन इफ यू लर्न द कॉन्सेप्ट देन पॉसिबली वी कैन सॉल्व ऑल दोस प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्या किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए? इसके 2 तरीके हैं. मैं एक तरीका फिलहाल दिखाता हूं. इफ दैट इज गुड एनफ एंड देन यू कैन डू इट ऑल द क्वेश्चन बाय दैट मेथड, दैट इज ऑल राइट. इफ नॉट देन आई कैन एक्सप्लेन यू वन मोर कॉन्सेप्ट. तो क्या किया जाए? तो लेट अस डू वन थिंग. ओके, इसका हमें निकालना पड़ेगा, ये वाला सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. चलिए देखो हम क्या करते हैं, इस चीज का हम क्या करते हैं.
we have to learn it in a very slow way so that we don't commit any mistake. ये देखिए, ये है हमारे पास डिस्क, इसका रेडियस r है और इस डिस्क का ये पोर्शन मिसिंग है, मिसिंग पोर्शन है, उसका रेडियस है r/2। ठीक, तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास इस पार्ट का निकालना पड़ेगा। मैं इसको ऐड करता हूं प्लस, ये छोटा डिस्क जो है मिसिंग जो है ये मैं ऐड करूंगा इसको, आई विल ऐड दिस लिटिल डिस्क r/2। तो जब मैं इसको ये ऐड करूंगा, लेकिन इसको ऐड करूंगा, इसको उठाकर यहां रखूंगा मैं, तो फिर जाकर के सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बिकम ए डिस्क, फुल डिस्क लाइक दिस इट विल बिकम। तो इस फुल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो तो सेंटर में होगा। इसका मतलब जब मैं इस चीज को ऐड करूंगा, इस डिस्क को इसको ऐड करूंगा, तो ये डिस्क फॉर्म हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास मिल गया मुझे सारे डिस्क का, वो तो पता है, वो तो सेंटर पर ही होगा बिकॉज इट बिकम्स अ फुल डिस्क। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास इसका यहां है, इतना दूर है एक्सियम, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास प्लस इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास, यानी कि अगर मैं इन दो बॉडीज को ऐड करूंगा मुझे सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा। तो जरा इन दो का सेंटर ऑफ मास कंबाइन करके मुझे बताइए, इसका और इसका कंबाइन करके मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बताइए इसका एरिया क्या है, सपोज का एरिया A1 है, उसका एरिया A2 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस डिस्क के, इस पार्शियल डिस्क के, इसका कोऑर्डिनेट समझो एक्सियम या x1 समझो, दैट इज मच बेटर बिकॉज यू आर फेमिलियर विद x1। x1 समझो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास x1 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, ये डिस्क यहां नहीं है यहां है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास r/2 है, r/2 है, उसका कोऑर्डिनेट ये यहां पर रखने से r/2। और दोनों का, जब मैं इन दोनों का सेंटर ऑफ ये कैलकुलेट करूंगा, वो सेंटर ऑफ मास यहां पर 0 0 हो जाएगा। तो व्हाट शुड आई राइट, यस A1 x1, A1 और इसका सेंटर ऑफ मास प्लस A2 x2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास दैट इज 0 ऑरिजिन, क्योंकि जब मैं इसको यहां रखूंगा तो दोनों का सेंटर ऑफ मास डिस्क हो गया, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां, ये यहां ऐड करने से सेंटर ऑफ मास यहां चला गया, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का ऐड करके यहां है, तो ये इक्वेशन मैंने लिखा और निकालना है x1 मुझे। सो A1 व्हाट इज द एरिया A1, इसका एरिया क्या है, इस पार्शियल ये एरिया है पाई आर स्क्वायर, सारा एरिया माइनस ये वाला एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये वाला एरिया इस पीस का वही हुआ ये वाला एरिया, इनटू x1 वही हुआ एक्सियम, प्लस व्हाट इज A2, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4, इसका सेंटर ऑफ मास यहां दैट इज r/2 इज इक्वल टू 0। A1 प्लस A2 क्रॉस करके यहां 0 हो गया, या ऐसे करके A1 प्लस A2 ये एरिया प्लस ये एरिया, लेकिन ये यहां से 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, ये हुआ 3 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्सियम, प्लस ये हुआ पाई आर स्क्वायर इंटू r बाय 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्सियम किसके बराबर, एक्सियम इज इक्वल टू वहां हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू r बाय 8, ये वाला शिफ्ट करके डिवाइड होगा ये 3/4 पाई आर स्क्वायर, ये खत्म होगा, r ऊपर रहेगा, 4 ऊपर होकर के यहां 2 हो जाएगा, सो एक्सियम इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 6,
माइनस आर डिवाइड बाई 6। तो इसका ये है, ये जो सेंटर ऑफ मास है r बाई 6 टू द लेफ्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ये ऑरिजिन है तो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया r बाई 6। दैट इज द आंसर। ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, मैं और एक उस पर करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, और भी क्लियर हो जाए। और एक तो टेक्निक ये है कि ये जो मिसिंग पार्ट था मैंने उठाकर इसको रख दिया यहां पर, और टोटल सेंटर ऑफ मास आपको निकला है सम ऑफ द टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू दिस सेंटर ऑफ मास, और आपको ए का सेंटर ऑफ मास मिले। इसका पता नहीं है, इसका पता था, इसका भी पता है, तो इसका निकल मिलेगा। चलो सेवंथ एक और एग्जांपल इसमें दिखाऊंगा मैं, एंड इट वर्क्स एवरीवेयर। सपोज आपका स्फीयर है, और स्फीयर का एक कैविटी है, तो आपको आप स्फीयर विद कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, वहां पर भी यही टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है। ओके, मैं और एक प्रॉब्लम दिखाना चाहूंगा आपको। एक डिस्क, यही डिस्क लिया मैंने, रेडियस r। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां r बाई 4 रेडियस का कैविटी बनाया। कैविटी क्या, एक मिसिंग पोर्शन है इसका। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका, इस डिस्क का विदाउट दिस पोर्शन, ये है मिसिंग पार्ट। तो मैं अब ऐड क्या करूंगा, यही मिसिंग पार्ट ऐड करूंगा, और लेकिन देखना पड़ेगा यहां और यहां क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ताकि आपको इसका, इस जो मिसिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास का पता चलेगा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज r माइनस r बाई 4, r माइनस r बाई 4, दैट इज 3r बाई 4। मतलब इस जो मिसिंग पार्ट का डिस्क है, मिसिंग डिस्क, इसका जो सेंटर ऑफ मास है 3r बाई 4 है। अगर मैं यहां कोई डिस्क रखूंगा तो उसका भी सेंटर ऑफ मास 3r बाई 4 होगा यहां से, क्योंकि सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट है ऑरिजिन से निकालना पड़ता है, ऑरिजिन से कितना दूर है ऑन द एक्स एक्सिस। तो प्लस क्या करोगे, प्लस ये डिस्क में करता हूं r बाई 4 का, दोनों जब मैं इसको मैं यहां उठा कर रखूंगा यहां पर, ये तो पूरा डिस्क बनेगा यूं, ऑफ रेडियस r, फुल डिस्क हो गया। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर आएगा 0। इसका एरिया क्या है, इसका एरिया सपोज A1, कितना होगा वो एरिया जरा बताइए, दैट इज पाई r स्क्वायर माइनस इसका एरिया, दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 16, पाई इसका रेडियस स्क्वायर, दैट इज 15 पाई r स्क्वायर बाई 16। ठीक, तो इसका एरिया A2, दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 16, इसका एरिया। इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वो पता नहीं है, दैट वी डोंट नो क्या होगा, कितना होगा ऑरिजिन से लेफ्ट साइड को या राइट साइड को, वी डोंट नो, होगा लेफ्ट साइड को ही, क्योंकि राइट साइड का मास जो है वो मिसिंग है, राइट साइड का मास मिसिंग। तो ठीक है, ये समझो x1 समझो, हमें x1 निकालना है, बाय xm इज xcm ऑफ दिस पार्ट, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, आप ये मत सोचो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इतना दूर है, ये प्लस मैंने किया है लेकिन है ये इधर, उठाकर यहां बिठा दिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, x2, इसका सेंटर ऑफ मास दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज दैट, 3r बाय 4, 3r बाय 4। तो अब आप लगाइए फॉर्मूला, इन दो का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालिए आप, व्हाट इज दैट, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास दैट इज 0। मगर ये जो दिस एंड दिस आर नॉट एट 3 प्लेसेस, इट इज एट दिस सेम प्लेस, ये यहां पर रखा और सब कुछ फिर ये यहां बन गया, लेकिन दिखाने में ऐसे ही दिखाना पड़ता है, so that you understand. So what is a1, 15 pi r square by 16 into x1 जो निकालना है, प्लस या xcm कर दो, इसका xcm या x1 प्लस a2, what is a2, that's pi r square by 16 into x2, what is x2, that is 3r by 4 whole divided by a1 plus a2 is equal to 0, ये वाला 0।
ये तो 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा। तो बताइए x1 किसके बराबर है? ये 0 हो गया, इसको शिफ्ट कर दो, दैट इज माइनस ही होना चाहिए बिकॉज इट शुड बी शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये शिफ्ट करके पाई आर स्क्वायर बाय 16 इंटू 3r/4 होल डिवाइड बाय दिस वन, क्योंकि ये 0 हो गया, ये इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x1 इसको शिफ्ट करके ये हो गया टू द राइट साइड, और ये डिवाइड करना पड़ेगा 15 पाई आर स्क्वायर बाय 16 खत्म हो गया, इधर पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो 3 5 15, तो व्हाट इज x1? What is x1? That is equal to, okay, minus or here whole divided by 5 4 20 आंसर। ये आप अच्छी तरह से देख लो, जब आपने 0 कर दिया तब ये अच्छी तरह से आप एक क्वांटिटी को शिफ्ट करो और ये डिवाइड करके आपको मिल जाता है। अब आप हो सकता है आप 2 स्टेप्स में कीजिए, मैंने एक स्टेप में कर दिया, आप इसको एनालिसिस करके 2 स्टेप में कर सकते हैं। ओके, दिस वाज टुडेज लेक्चर। There's a lot of stuff available on my app. More questions are available there. You can download it from my app, Tantray Physics Classes, and there are solutions also available on that app. Thank you.